अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील शाहिद और आप देख रहे हैं पावर लंच। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं दुबई में ऑटो मैकेनिका 2011 की नुमाइश पर। ऑटो मैकेनिका की नुमाइश का ताल्लुक दुनिया भर की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से है। इसका ताल्लुक जो आफ्टर मार्केट है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के, मतलब कि जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है ट्रक्स के अंदर, ट्रैक्टर्स के अंदर, छोटी गाड़ियों के अंदर या बड़ी गाड़ियों के अंदर, उन तमाम प्रोडक्ट से ताल्लुक रखती है ये नुमाइश। इस नुमाइश में दुनिया भर से कंपनीज आई हुई हैं, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, या दुनिया भर के जितने भी ममालिक हैं उन तमाम जगहों से कंपनीज आई हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर नुमाइश की हुई है। पिछले साल भी हमने आपको ऑटो मैकेनिका की नुमाइश दिखाई थी, मगर पिछले साल नाजरीन यहाँ पर पाकिस्तान की किसी कंपनी ने कोई नुमाइंदगी नहीं की थी। इसके बावजूद कि पाकिस्तान के अंदर पार्ट्स और डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं गाड़ियों के वो मैन्युफैक्चर होते हैं। इस साल बहरहाल TDAP की जानिब से जो है 6 कंपनीज जो हैं वो लाई गई हैं। 6 पाकिस्तानी कंपनीज इस नुमाइश में शिरकत कर रही हैं और जो है ये TDAP की तरफ से लाई गई हैं जो कि पिछले साल नहीं आ सकी थी। आज हम इन कंपनीज की तरफ भी चलेंगे साथ ही साथ और पूरी नुमाइश का आज दौरा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके की नुमाइश है ये और कैसा रिस्पांस आ रहा है यहाँ पर पाकिस्तानी कंपनीज को। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, हम मौजूद हैं ऑटो मैकेनिका 2011 की नुमाइश में दुबई में। पिछले साल भी इस नुमाइश में हमने शिरकत की थी। पिछले साल भी हम लोगों ने यहाँ पे लोगों से बात की थी, आज भी हम कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है महमूद गाजी, सीनियर शो मैनेजर ऑटो मैकेनिका मिडल ईस्ट। इनसे हमने पिछले साल भी गुफ्तगू की थी, इस साल इनकी राय जानते हैं कैसे इस नुमाइश में तब्दीली देखी है। हाय महमूद, हाउ आर यू? Hi Adil, nice to see you again. Nice to see you again as well. Mahmoud, let's I'll just ask you to sum up everything from last year and this year. What's changed this year? Well, the show got bigger, better. I mean, it seems to be everyone is happy again. I mean, it's just we have the same standard, of course, the same quality. Overall, it's looking great. Yeah. And if we talk about in Pakistan's terms, I mean, what's changed on the Pakistani side? I've heard that there are companies here, so can you tell us something about that? Yes, I'm very happy to actually announce that the Pakistan pavilion is back at Auto Mechanica Middle East, and we have actually 6 companies from Pakistan. That makes me extremely happy because I'm from Turkey, and to our brothers in Pakistan to see a pavilion in my show, it's an amazing scene. I'm glad because last year they weren't able to make it, but this year they're finally back in this exhibition. So what are your expectations out of this exhibition overall? How many exhibitors are there? How many people, how many visitors are you expecting? Can you tell us something about that? Overall, we have 1,102 exhibitors from 52 countries. We have 21 official country pavilions, including Pakistan, and we have 31 industrial associations supporting the show. So overall, the visitor data, of course, we will have that on the last day of the show. And then we'll declare it obviously after the show. However, I mean, from the first day, as you can see, it's a very, very busy show, and the exhibitors are giving very good feedback. So looking forward to very high numbers on number of visitors. Just for the understanding of people who are watching you, can you tell us a little bit about as to what Auto Mechanica is about? I mean, what kind of companies come and participate in this exhibition? Sure. I mean, Auto Mechanica Middle East is an aftermarket automotive show. That means that we have everything about a car, but the car itself. So when a car leaves a showroom, needs things to be changed, like the brake pads, you know, like the clutch disc and everything. And what we have in the show is everything about the car. It means around 2,000 products for a car that you can find at Auto Mechanica Middle East. And within the show, we have 5 sections. Actually, within these sections, for example, parts and systems, repair and maintenance, accessories and tuning, tires and batteries. So when a visitor comes to Auto Mechanica Middle East, they can actually get to visit each and every product line very easily. नाज़रीन, महमूद गाजी जिनसे हमने बात की, सीनियर शो मैनेजर ऑटो मैकेनिका मिडल ईस्ट। पिछले साल पाकिस्तानी कंपनीज ने शिरकत नहीं की थी, इस साल मगर 6 कंपनीज आई हैं। उनकी जाने भी चलेंगे, साथ ही साथ दूसरी कंपनीज की तरफ भी चलेंगे और आपको सैर कराएंगे ऑटो मैकेनिका 2011 की। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, हम दाखिल हो चुके हैं ऑटो मैकेनिका की इस नुमाइश में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक टोयोटा सफारी खड़ी हुई है और इसका यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। साथ ही साथ एक और सफारी पीछे भी खड़ी हुई है, इसका इंजन जो है उसका भी डिस्प्ले यहाँ पर हो रहा है। साथ ही साथ लेफ़्ट साइड पर UK से कंपनीज आई हुई हैं, बरतानिया से कंपनीज आई हुई हैं, आगे इंडिया का पवेलियन मौजूद है और इंडिया से काफ़ी सारी कंपनीज आई हुई हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स की नुमाइश कर रहे हैं। और थोड़ा अगर हम आगे चलें तो हम देख सकते हैं कि राइट साइड पर टूनीशिया की जानिब से एक बहुत बड़ा पवेलियन लगाया गया है और टूनीशिया की जानिब से भी बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर आई हुई हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हमें पाकिस्तान का पवेलियन भी मिलेगा जहाँ पर 6 पाकिस्तानी कंपनीज आई हुई हैं।
नाजरीन, जैसे कि हम दौरा करें ऑटो मैकेनिका की नुमाइश का, इस वक्त हम जर्मन पवेलियन में मौजूद है और यहाँ पर मैं एक कंपनी के पास पहुँचा हूँ जिसका नाम है शेफलर ग्रुप और मेरे साथ मौजूद है इनके मैनेजिंग डायरेक्टर। इनसे बात करते हैं इनकी कंपनी के हवाले से और देखते हैं कि क्या ये पाकिस्तान को सप्लाई कर रहे हैं और अगर कर रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट को। हेलो सर, हाउ आर यू? Hello. Very well, and you? Thank you for coming. Welcome in our stand. Great, thank you so much for taking time out for us as well. Sir, tell us a little bit about your company and the products that you're manufacturing right now. Of course. The Schaeffler Group is a German international company. It's also a family company belonging to the family Schaeffler. We are a company of around 65,000 people working all over the world, and the turnover of last year was 10.2 billion euro. We are supplier of the automotive industry for all different kind of parts like clutches, gearboxes, engine components and engine parts. And of course the bearings which we are using for engines and wheel bearings and all these things. We are a big supplier of the heavy industry like railway, like power plants, power stations, mills and steel plants and all these things. With bearings, especially with FAG, and we are also supplier of the FAG bearings for aerospace, like the bearings for the engines of the Airbus 380, Boeing 737, etc. So the whole company all over the world, around 130 factories are all over the world, producing for all the big manufacturers like Mercedes, BMW, Volkswagen, Peugeot, etc. You name it, they are our customers. What we have here is, and I'm responsible for this, is the Schaeffler Middle East. The Schaeffler Middle East is the daughter company of the Schaeffler Industries for the Middle East area, which starts from Egypt and ends in the Indian borders. So, Mr. Yanis, if we talk about Pakistan, and can you tell us, does that come under your jurisdiction as well? Have you been supplying parts to Pakistan? Yes, we do, and we have also some kind of an office in Pakistan, and we have also our people in Pakistan, two of them, which are working in Pakistan from Karachi, and they are all around the country, servicing the heavy industry in Pakistan and also wherever necessary the automotive. So we are in Pakistan, we are established there, and we are also thinking to increase the business there and put even more people. You see Pakistan as a country which will actually grow in terms of the automotive industry, and the demand for auto parts will grow. We are a big market, so many people, a lot of industry, a lot of heavy industry. So this is a very interesting market for us also, yeah. Yes. Yes. That's why from the beginning Pakistan was a part of our operation here in the Middle East. Yes. Yeah. That's brilliant. Thank you so much for speaking to CNBC Pakistan. Great. नाज़रीन, ये थी दिस वाज द शेफलर ग्रुप जिन्होंने हमें बताया पाकिस्तान के हवाले से, अपनी कंपनी के हवाले से कितना अहमियत रखता है पाकिस्तान इनकी कंपनी के लिए। यहाँ पे जर्मनी में और भी बहुत सी कंपनीज, जर्मन बूथ में और भी बहुत सी कंपनीज मौजूद हैं, उनकी जानिब चलेंगे और उनसे भी उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अब हम पहुंचे हैं लिक्वी मॉली GmbH के स्टैंड पर। लिक्वी मॉली एक बहुत जाना माना नाम है पाकिस्तानी मार्केट में। इनसे बात करते हैं साल्वाटोर कॉर्नेलियो, जो कि एक्सपोर्ट एरिया मैनेजर हैं। उनसे जानते हैं पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से, साथ ही साथ वो कौन से प्रोडक्ट्स की नुमाइश कर रहे हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? I'm fine, thank you. Thank you so much for taking time out for CNBC Pakistan. Sir, Liqui Moly, we've seen this brand name a lot out there in Pakistan. Can you tell us a little bit about your brand, the products, your product portfolio? What do you manufacture? Yes, Liqui Moly is a German manufacturer of automotive chemicals. We are a full-line supplier, starting with lubricants, motor oils, engine oils, additives for oil, fuel, and radiator. Then we have all the chemical aids for the workshop, like service sprays, type of brake and clutch cleaner, rust penetrant, these type of things. Then we have car care range, polishes, cockpit shine. We have a vast product range of industrial lubricants as well. We are dedicated also to motorbikes, to boats, and garden equipment. So wherever in the lubrication. That's a very vast area. Yeah, we have more or less 1,500 different products in our product range. Brilliant. So can you tell us about the Pakistani market? How long have you been dealing with the Pakistani market, and where do you see that market going? Actually, we had started in Pakistan before the year 2000, before the millennium. So I think it was 1998 or 1999. I didn't work at that time in the company, but I know that we have been present. We have gone through ups and downs, and since about 4 years, we have a new partner
whose name is Liqui-Moly Pakistan, formerly known as Classic Lubricants from Islamabad. We are on a good way. We are increasing our sales gradually every year. Pakistan is an important market, it's a big country with a lot of cars. I want to express that our product range is not only limited to cars. We have, as I mentioned before, also a good industrial product range. So from that point of view, for us, there's no limit. Thank you so much for speaking to CNBC Pakistan. Okay. Thank you very Thanks you very much. नाज़रीन ये थे Liqui-Moly जिसके हवाले से हमने बात की। पाकिस्तान में बहुत जाना माना ब्रांड नेम है, बहुत सारे एरियाज़ में इस्तेमाल भी होता है। कुछ और कंपनीज़ की जानिब भी चलते हैं, उनका पर्सपेक्टिव जानते हैं और साथ ही साथ उनकी राय भी शामिल करते हैं पाकिस्तान के हवाले से। आइए। नाज़रीन अब हम पहुंचे हैं सर्क रेडिएटर के स्टैंड पर। सर्क रेडिएटर भी पाकिस्तान में सप्लाईज कर रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उनके ऑपरेशंस डायरेक्टर जनाब विलियम टायरल। उनसे बात करते हैं सर्क के हवाले से और साथ ही साथ वो किस तरीके से देखते हैं पाकिस्तानी मार्केट को। हाय विलियम, हाउ आर यू? I'm fine, thank you very much. William, so thank you so much for taking time out for CNBC. Can you tell us about Circ Radiator? What do you manufacture, and are you supplying these products into the Pakistani market as well? Yeah, sure, of course. We're actually a British-based company. We've been in operation 100 years, specialising in the radiator manufacture, oil cooler, heat exchanger, etc. One of the marketplaces is the oil and gas and energy sector, and recently we've had some involvement with a company called Agreco, who had 56 generators supplying power in the Pakistan market. All those units, when they get returned, we refurbish them with Circ services, refurbish the radiator and cooling packs, and then they're then sent back out into the marketplace. We're part of a Unipart group of companies. They're a British-based company, and our sister company Intertruck, we're doing a joint exhibition with them now here at Automechanica. We've been dealing on and off for years and years now in the Pakistan and in the India region. A lot of our employees being Pakistani or Indian and Filipino. So yeah, we mainly, as I say, oil and gas, automotive radiator, you can see here, USA truck range of radiators and also European truck range of radiators. So we're covering quite a wide field in the cooling sector. And lastly, I'd like to ask you about where do you see the Pakistani market going? Do you think it's an important market given there's a lot of demand for energy right now? Plus, obviously, the automotive industry is also in the growth phase when it comes to people buying more trucks, more cars. So how important do you find the Pakistani market for your company? Yeah, Pakistani market is very important to us because, as you say yourself, it's a growing marketplace. And there's a big requirement just now for the energy sector. You know, developing countries there's always that case. The automotive, heavy-duty truck, yeah, again, is growing. There's more demand. You know, there's a lot of development going on in these countries, and we want to be part of that development in the future. Thank you so much for speaking to me in CNBC Pakistan. Thank you. नाज़रीन हम मौजूद हैं ऑटो मैकेनिका 2011 की नुमाइश में दुबई में। इस वक्त हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्फा। आप देखते रहिए पावर लंच।